अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हम आपको मिलवाएंगे कैलिफोर्निया से हमारा गेस्ट आए हैं अमेरिका से स्टेफनी, जो कि इस वक्त हमारे साथ कलाम में हैं। इनसे पूछेंगे कि कलाम की खूबसूरती और यहाँ की जो उन्होंने विजिट किया है जिस इलाके पे, तो ये क्या कहेंगे। वेलकम टू कलाम, हाउ आर यू? I'm perfect. How are you? What about Kalam in local hotels? Oh, I love it. This is a wonderful hotel. I came here yesterday. I love Kalam. People are so friendly here. I feel like it's very safe. There's so much to do. A lot of lakes to visit, good hiking, good food too. It's just been a wonderful trip. Which lake you are like? What is the name? Condor, Lake Condor. So we took a shared taxi and we just started hiking, and it was so beautiful too. It was a perfect day to go hike. What about local people or village? Oh, everyone stops me and they say, "Where are you from?" and welcome to Kalan. Is this your first time here? People offer to buy my food and they want to take selfies, and they're just beyond friendly here. Do you recommend? Oh, Kalam. 100%. I would love to come back. I think it is very safe, very good people. What about the hotel we are stay? Your hotel Heaven Rose. It's actually been one of my favorite places because you're so kind, and the showers were so hot, the bed was so comfortable, and you provided a lot of good information about the location. And Price hotel normal or oh, high? we were really surprised like what a good price it was. It was such a good price too, and it was highly recommended too from multiple blogs and a different friend. They said come here to this hotel. So Which famous dish in Kalam? Local. I'm vegetarian. Vegetarian. So I went to this restaurant yesterday and I asked just for some rice, but they brought rice with raisins and paratha and ton of vegetables too. I really enjoy the food here. The local food names Chamagyal is very famous. Chamagyal? Meat and جوار روټي ته سوای فز د کریمه بس دا تاکي خکار अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये गुलमुरा मामा है। एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता है काफ़ी सालों से। ये बहुत गरीब बंदा है और इनको मदद की ज़रूरत है। पिछले साल इनकी बीवी भी फौत हो गई। आइए मिलते हैं इनसे कि वो क्या करना चाहते हैं। जी मामा जी। तो सोनो वक्त दलते पर स्कूल की परी जी की 18 साल से ये इधर ही है। और नूर हालात मालात तखरी गरीबी मरीबी रिश्ता करना डेरा गरीबी तो डेरा था। और ता तो दस ज़रूरत थे ता तो ज़्यादातर बस कोर में शहर है कोर वादान कवल वाड़म छोकरा समझदार कवले डेरा में की। अच्छा मामा कह रहे कि मैं पिछले साल मेरे घर वाली फौत हो गई और अभी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अगर कोई है गरीब लोग हैं चाहे जैसे भी हो तो मैं उनको पाल भी सकती हूँ, उनको 2 वक्त की रोटी भी दे सकता हूँ और एक छोटा सा मकान है। अगर कोई है तो कहते हैं मुझसे राब्ता कर ले। जी और कुछ और बस और सनिश्ते नूर च कम संग ने वक्त बची बची रिश्ता का ना बची रिश्तों ने लुई दी कवाड़े दी बस लुई दी आगा साल वदुना वाला दे खा बच्चों ने जान वदुना कड़ी दी खा नो ताला पकोर की सच्चे रोटे मुठे न रखी के ना तरकई देला खा फुला कजान वादा कवल वाड़ी खा जान वादा कवल वाड़ी नो देश रब लके गशी के ना दा चखपल कोर सड़ी आबादी नो बे ورته हर शा सहूलत और हर शई दغه موجودي کنه دسی دا کنه खा نو मामा وای زه دیو ماده کول غواړم او چرته چا په نظر کې سوکي نو دا غریب سړی دی وای غټه ما روټه ولا ورکولې شمه وای کور غریبه کور دی او خپې عزت سره خپې دغه سره به ساتم
نو که چا ملګرو ته چاته داسې ضرورتمنده څوک وي او څوک یې نه وي نو دې ماما سره رابطه وکړئ او که چا د هغې نه بېشکه په کومنټس کې به د هغې ټلیفون نمبر به هم درلیږو او که چاته بیا څه پکار وي نو دې ماما سره رابطه کولی شي نه نو ماما چې واده وکړي نو ښځه ساتلی شي که نه हाँ बिल्कुल अल्लाह भी साथी ښه ښه और सब बराबर दे दो मुझे ښه ښه هسې نه چې بیا سبا ورچې ډوډۍ نه شي ورکولی ना मना अल्लाह भी अगर कहीं ښه ښه زه ټیپ شو ځه